30তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের গতকাল ছিল চতুর্থ দিন। প্রতিদিনের মতোই দর্শকদের ভিড় ছিল বরাবরের মতোই লক্ষণীয়। আজ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের পঞ্চম দিনে শিশির মঞ্চে একটি সেমিনারে উপস্থিত হবেন সিকিম ফিল্ম কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট শ্রী দীপেন্দ্র মোহরা। সেমিনারের বিষয় ডিজিটাল যুগে শর্টস এবং ডকুমেন্টারির ব্যাপক বৃদ্ধি। এই উপলক্ষে গতকাল কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে সিকিম ফিল্ম কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট শ্রী দীপেন্দ্র মোহরা, সিকিম ফিল্ম সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী রূপা তামাং, শ্রী ভবেশ প্রধান এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির প্রতিনিধি ডক্টর রাহুল ব্যানার্জি উপস্থিত হন। অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালিকা শ্রীমতী শতরূপা সান্যাল। Not a story which is being retold and and been shared with anybody and everybody all around. This was bound to happen. This is an organic growth and an organic relation. Sikkim Film Cooperative Society, which was founded in 2020, had its first maiden meeting in the same place where you're talking today to spearhead and to catapult the Global Cinema Festival of Northeast for the first time in India. GCF happened thereafter. Well, the first meeting happened here under the aegis of Film Federation of India, Dipendra Mohra, Bhavesh Pradhan, we had Mr. Ghimiri, we had most of the members of SFCS donning the atmosphere here and making the atmosphere more august. It was here where the Film Federation of India had its first meeting with Sikkim, and Sikkim hosted the first Global Cinema Festival in 2020, attended by 250 celebrities across Bollywood, Tollywood and even Hollywood. That included Padmini Kolhapuri, that included Manisha Koirala, who is considered the daughter of Northeast, for that matter, because she speaks the same language. That included the ministers, the chief ministers, that included Tollywood brigades like Gargi and Ognimitra and anybody and everybody, including all the bureaucrats from Calcutta and Bombay. So today, Sikkim has got a robust, cogent film policy to boot, which probably is second to none. Karnataka has one, Gujarat has one. Sikkim's film policy is matured to a level where there is an acceptance by one and all. The finer nitty-gritties of the film policies can be spoken to you and discussed with you later, but to give you some signature and attribute bullet points of the film policy is that if Mr. X wants to create or do a film in Sikkim, in the guise of either a producer or a director or a line producer, actor, actresses, sub-actors, whatever, anything and everything around the paraphernalia of cinema making, the state supports you financially by way of subsidy. Sikkim Film Cooperative Society, as the special purpose vehicle, is the bridge between the state, the administration, the bourgeois and the filmmakers community, including animation studios that we have there, the hub centers that we have in Sikkim today under MSME modes. So making film in Sikkim is as fine or as crystal in terms of its process as a dream that you can think of, which is basically being put into reality. So today if you see the global cinema index, I don't know what is that committee called, but I think which actually talks about the kind of box office revenues that generate from films all across Asia. Switzerland takes around 35 to 40% of film making costs. Sikkim wants to come in place of Switzerland, or for that matter any part of North Europe, and making itself the first rendezvous and the first signature destination for people who want the same experience by way of they say it phantasmagorical in their evanescent luminance. You have the Kanchenjunga, you have the snow-capped mountains everywhere around you, you have got the flower beds across the nature. You don't need to put in a set there. It's basically a dream come true. And Sikkim, and because of COVID, there was a hibernation. We have kept all our efforts kept in abeyance. Multuvi isko bolte hain. Now that we are now back in the rung of more operational theorems being put into place, Sikkim is going to come in, replacing Europe for all the big line producers, all the big bank production houses, including anybody and everybody across from Calcutta, from artists, from connoisseurs of films, and people even having budgets of say 50 lakhs to 1 crore.
We are there for you. So we have with us Mr. Deependra Mohra, who is a president of Sikkim Film Cooperative Society. He had run for the vice presidentship of Film Federation of India's thing. We have, he is currently, he is a filmmaker. He's a short documentary. He's an artist. He's a script writer. Of late, he has produced a film called Moments, which would be talked of in the near future in terms of his greater acceptance, because and he's a panelist today at the KIFF. He would be part of a very cogent subject which we are all eager to hear on. It's basically on short films and documentary, which talks about the continual filmmaking theory, which means a film doesn't stop at the end of 2.5 hours, but there's a story that can be carried on. He's going to speak on his problems and his issues during COVID. We have Rupa Tamangi. She is a vice president of Sikkim Film Cooperative Society. I would ask Rupaji, because she is very fluent in Hindi and English, to talk about the kind of stuff that she's been into in terms of her. Yeah, so Rupaji, over to you. We have formed Sikkim Film Cooperative Society in 2019 to promote regional films. और सिक्किम में हम रीजनल फिल्म्स और सिक्किम का जो फिल्म पैटर्निटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए और सिक्किम का फिल्म पैटर्निटी को नेशनल और इंटरनेशनल तक ले जाने के लिए हमने सिक्किम फिल्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया है। ऐसे ही 2021 में हमको सिक्किम फ्रेंडली स्टेट अवार्ड भी मिला। ये भी एक हमारे लिए अचीवमेंट है। जैसे देखने में मतलब सिक्किम में जो फिल्म के लिए एकदम सुटेबल जगह है। सिक्किम लिस्ट पॉपुलस और लिस्ट पोल्यूशन फ्री, लिस्ट पॉपुलस पोल्यूशन फ्री और एकदम शांतिप्रिय स्टेट है। सो दैट जो भी फिल्म टीम है ना, जो भी फिल्म का टीम है वो स्मूथली और शूदिंगली आप वो काम कर सकते हैं। और हमारे रीजनल कल्चर, वहाँ का संस्कृति, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे। ऐसे ही हमारा सिक्किम का जो कल्चर है इसको आगे बढ़ाएंगे। और नेशनल जो भी मतलब बॉलीवुड का जो भी टीम है उन लोगों के लिए हमारे सिक्किम में वेलकम है। आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि हमारे सरकार ने फिल्म फैटर्निटी को फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी भी दिया है इन कैश और इन काइंड, जो भी आप लोगों को है। लेकिन आप लोगों ने सिक्किम को 75% तक सिक्किम को दिखाना होगा, सिक्किम को सुंदरता को सिक्किम का दिखाना हो, क्योंकि हमारे वहाँ एकदम सुंदर सा माउंटेन्स है, रिवर्स है, वाटरफॉल्स है और हमारा विलेज भी एकदम ब्यूटीफुल है। और आप लोगों के सबसे अच्छा वहाँ हमारा सिक्किम का क्लियर स्काई दिखने को मिलेगा और ग्रीनरीज भी बहुत ब्यूटीफुल है। और हमारा रोड साइड जो है ना एकदम रिवर साइड में है और वो भी आप लोगों के लिए लोकेशन एकदम ब्यूटीफुल है। नमस्कार, हम लोग सिक्किम फिल्म कोऑपरेटिव सोसाइटी रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी रिप्रेजेंट द एंटायर सिक्किम का जितना भी फिल्म का फैमिली है। यहाँ पे हम लोग का कोलकाता फिल्म फेस्टिवल जो 30 साल से चले आ रहा है, इसको पार्टिसिपेट करना हम लोग के लिए इतना ज़रूरी था। और हम बहुत खुशी है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैज़ कॉल्ड अस, हैज़ इन्वाइटेड अस एंड हम लोग का प्रेसिडेंट को एज अ पैनलिस्ट भी बुला लिया है। हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है कि अभी जितना भी है, टॉलीवुड इज़ अ वेरी अपकमिंग, मतलब इट्स अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री है। और हम लोग बचपन से देख के आ रहे हैं कि सब मूवीज़ का छोटा छोटा पार्ट भी सिक्किम में होता रहता है। हिल्स में कुछ ना कुछ शूटिंग चलता रहता है। अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम लोग के साथ कलकत्ता के साथ इतना अच्छा संबंध हो कि आप लोग को यहाँ से सिक्किम में आने में कुछ दिक्कत ना हो। ओके, यहाँ से हम लोग एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और सिक्किम फिल्म कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे आप लोग के लिए सब्सिडी के लिए जो गवर्नमेंट दे रहा है उसके लिए हम लोग आपको सहयोग करने के लिए हम लोग अब बैठा हुआ है। ओके, अभी हम लोग इस आने के मेन उद्देश्य है, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हम लोग आपको बताने चाहते हैं कि हम लोग सिक्किम में आइए, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं।
और इसके हम मिलके करेंगे, मिलके बढ़ेंगे। और मतलब इससे क्या होगा कि यहाँ का इंडस्ट्री को भी कुछ बूस्ट मिलेगा, हम लोग को भी कुछ बूस्ट मिलेगा, और साथ में हम मिलके बढ़ेंगे, क्योंकि अब पहले से ही ये नाता तो था, इसको और स्ट्रांग करके हम आगे और बढ़ेंगे। ক্যামেরায় অত্রি ব্যানার্জির সাথে কিংসুক চক্রবর্তী, ATN বাংলা, কলকাতা।